Welcome to Media. This is your host, Tariq. So, continuing with our resilience series, I say this in all my interviews that it takes a lot of courage, a lot of bravery to come forward and share your struggles, your failures, your miseries, and especially if you're a female. खास तौर पे because I think we as a society, as a culture, we judge a lot females को कभी कपड़ों पर, कभी मेकअप पर, कभी प्रोफेशन पर, कभी बच्चों पर और इसी डर से जो females होती हैं they have a lot of fear coming forward and sharing their stories because they have the fear of being judged. So I commend all the guests who come forward and share their stories, especially female ones. So on that note, I would like to welcome Dr. Saleena Arif, who is our next guest. Assalamu alaikum, Saleena. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ठीक ठाक आप सुनाएं Allah karam. Thank you very much for coming forward and doing this. I really appreciate it. Especially you have a kid or family or profession. इतने से सारी चीजों में it's very tough to take out time just with the hope that your interview will help other juniors. जी बिल्कुल I was a little apprehensive first, as you know, because I was thinking that mashallah there's so many brilliant colleagues, seniors, juniors who are doing amazing things and all sorts of competitive fellowships. And I feel like my story is pretty simple, but I guess I can still help other, female doctors, especially who are in the same boat as I am and who might be looking for some additional answers or what they can do. Sure. अच्छा अब मुझे ये बताओ कि tell us about your journey from medical school till today. कहाँ से graduate किया, कब किया, medical school कैसा था और उसके बाद का सारा सफर? So I'm from KE and मेरा batch था 2005 to 2010 and all of us got our degree in 2011. तो हम sort of 2011 batch ही कहते हैं अपने आप को. And I came from OA level, so obviously it was very challenging entry test and prep and all that. So the first year initially medical school ka was very challenging. There were times I just wanted to quit जब physiology वाले professors fail करते रहते थे और उनको वो लंबे answers with the markers and highlights and all that. But then obviously you get used to it. In third year में फिर वो change हो गया था MCQs and all that, so that became easier. Medical school के बाद I did electives Emory University में. That was in 2011, right after like my exams. I came here, I did electives, cardiology and nephrology, if I remember correct. Yeah. कहाँ पे किया? Emory University at Emory Atlanta. University. सही. So those two, and then I went back home, missed my graduation, unfortunately. But well, you gotta do what you gotta do. So उसके बाद फिर was a little confused कि आगे क्या करना है. My dad really, who's a doctor, radiologist himself, he really wanted me to pursue USMLE. So he was like, maybe you should try. और elective सोच के तो इसीलिए किए थे, but I still wasn't like 100% कि यही करना है. So anyway, made the decision of pursuing USMLE, started the preparation. उस वक्त फिर जब मैं वापस आई थी elective से, so most of my classmates had already started their house jobs. But then I started with वो जो late batch होता है या जो भी supplementary batch, whatever it is called. तो उसमें फिर cardiovascular surgery और psychiatry के अंदर की थी बड़ी chill सी house job. 6 months का वो कर लिया था और उसके साथ साथ then I prepared for my USMLE. Took my step one kind of later than when I thought due to some like family issues. Grandparents से साथ बीमार हो गए और मतलब थोड़ा घर पे कुछ situations थी ऐसी which kind of delayed my original plan. So I took step 1 in 2012 June if I'm not wrong, and step 2 the same year in December 2012. So then 2013 March I got married, came here फिर CS दिया था. Initially I was on just a visitor visa. शादी के बाद change नहीं किया because I wanted to apply that year for 2014 match. So I was like, maybe I'll just, try to get my own visa. My husband at that time was on H1B. Yeah, like student visa say he was switching over to H1B. So he was also kind of in a switch over himself. So I didn't want to come as a spouse and then be dependent and all that. And he's not a doctor, right? He is not a doctor. He was doing his MBA over here जब शादी हमारी हुई थी, और he works for Amazon. So अच्छा, very nice.
since then. Yeah. सही सही. और फिर उसके बाद क्या हुआ? So उसके बाद फिर when I was here in 2013, एक मैंने observership फिर और कर ली. I couldn't, obviously you can't do elective when you're not a student anymore. But then we were living in Indianapolis, Indiana. So I did सही. an observership in Indiana University, which was just like walking distance from my house. It was in cardiology again. उस वक्त फिर again थोड़ी confusion हुई कि अब husband is on H1, अब H4 मैं करना नहीं चाह रही थी because at that time H4 you couldn't work on H4 visa. You could study, I guess, or do research, but not really work. हाँ, उसकी कुछ होता है कि मेरा ख्याल है आपको you have to wait till you get the EAD and then only then you. I guess in 2013 you couldn't even do that. Like that came later on. Yeah. हाँ, so I think 2015 में वो rule change हुआ था कि आप at least you can work on EAD. So just to add for those who don't know, H4 is the visa कि अगर आप H1 पे आए हो ना तो the spouse of H1 gets an H4 visa. ठीक है? Exactly. Go ahead. Yeah. And now you can actually work on H4 with EAD के साथ. So उस वक्त फिर ये था कि I applied for my match. उसमें challenges फिर ये थे कि since my husband was not a doctor and he was already working for Amazon, and at that time Amazon was big, but not as big as it is now. That's a company which has progressed rapidly in just a few years. So he had very limited options of where he could be. And obviously fresh out of his MBA, he had just started such a good job. So I had to keep in mind that, there is no way that he's going to change his job. So that was like one constant. And then I had to plan my life according, to his job. So फिर मैंने काफी actually limited जगहों पे application दी थी. So I did not apply like 100, 150 programs में जैसे ज़्यादातर होता है और शायद करना चाहिए था, but लेकिन I kind of focused geographically because I wanted to be at a driving distance from Indianapolis. और Indianapolis के अलावा कुछ 3-4 और जगह जो थी कि जहाँ पे like Philadelphia for instance या एक दो और मतलब states जो थे उसके अंदर जहाँ पे वो कर सकता था move, तो उसके मुताबिक मैंने फिर apply किया. It was kind of limited. And then my scores were actually pretty good in USMLE. 258, 256, something like that. Step 1, step 2, I don't remember किस में कितने थे, but they were good. Electives उस वक्त मतलब I was a little reckless and overconfident too, I would say. I was like, अच्छा ठीक है यार, बस हो जाएगा, score है, electives हैं, और क्या चाहिए. उस वक्त मतलब इतना वो यही था कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा. So लेकिन ये है कि आपको ऐसे नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा you still need to consider, different factors, and you still need to kind of focus कि आप अपनी application और ये वो सब कुछ फिर भी सही करो. Just the scores alone and just the electives alone on your CV aren't, not gonna get you where you want to be. So I would say I was very careless with my personal statement. ऐसे 2 दिन में लिखी, एक आधे बंदे से review कराई and just kind of uploaded everything, और वो भी limited numbers के साथ. लेकिन माशाल्लाह ओवर कॉन्फिडेंस की हद ये है कि फिर भी पता था कि हो जाएगा. तो कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं होगा. So अल्लाह का शुक्र है कि हो गया. इंटरव्यूज थोड़े से थे, but I didn't really bother. जहाँ पे जिन जगहों पे मुझे चाहिए थे वहाँ पे हो गए. So I ended up matching in Grand Rapids. It was a IMG friendly program, और काफी पाकिस्तानी थे, कई से थे, हमायूं भाई और शहीद भाई और फिर वो कुरम वगैरह सारे काफी लोग थे वहाँ पे पाकिस्तानी. So I was very happy. The only caveat was it was J1, or it wasn't on the top of my list, but H1 वाले programs थे. But I guess जिस चीज से आप भाग रहे होते हो वो तो जरूर आपके साथ होती है. So it was a J1 program. 3 years. We had to be long distance as well. कितनी दूर है Indianapolis से Grand Rapids? Indianapolis almost 5 hours, 4.5, 5 hours in winter, sometimes longer. 3 years में मैंने मेरे ख्याल से ये drive शायद 2 दफा की होगी. My husband, mashallah, did it every other weekend, every weekend as much as he could. Initially in my first year, he was actually on night shifts. हमें लगता है कि as physicians हमारी life बड़ी tough है और हमारी shifts होती हैं ये वो. But I feel like जब at a certain like a professional level सबकी ही सब professions बहुत tough है. So he had a very difficult working hours. Sometimes मेरे से भी ज़्यादा होती थी, and he had a night shift for the whole year. So it was
it was difficult, of course. Now that I look back at it, लगता है कि अच्छा हाँ बड़ा सही था, हो गया. But the first year was definitely very challenging for the residency. So सही. हाँ, बस वाह. वो और आप कह रही थी आपकी स्टोरी चैलेंजिंग नहीं है, राइट? पता नहीं, शायद अब लगता है कि नहीं है, लेकिन होगी. अच्छा चलो आगे बताओ. तो पहला साल जरा मुश्किल लगा, कुछ ज्यादा यही कि मतलब आई नेवर लिव्ड अलोन बेसिकली. शादी करके बस इधर आए, मतलब आप क्या 25 26 जो भी एज होती है पाकिस्तान में, you know, as girls you've never really lived alone, you're so dependent on your parents, your brothers, सारी आपकी चीजें कर रहे होते हैं. So it was पहले दिन orientation of my residency, I had a major car accident. पहले दिन सुबह 7:30 बजे जी ड्राइव करके ओरिएंटेशन पे जा रही हूँ, और ये नहीं पता था कि जब वो ग्रीन लाइट टर्न होती है, यू कैन नॉट टर्न लेफ्ट. सो you have to yield and give the other person. अच्छा सही है. जो आते हुए you ट्रैफिक have है to उनको you पहले have to जाने wait for दोगे. the oncoming traffic to turn left. So पहले दिन ही जी आप गाड़ी मार दी. ब्रांड न्यू गाड़ी थी, अभी 7 days हुए थे, लीज पे थी. So thankfully we had insurance and they covered it. But and the good thing is it did not come on my record because I was driving on my international license. अच्छा सही है. तो फिर वो हुआ, फिर उसके बाद कोई 2 अटेम्प्ट्स हुई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए. तीसरी अटेम्प्ट पे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया फाइनली. सो मतलब वो इस तरह के यू नो सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट सो यूज्ड टू ऑफ इन पाकिस्तान, और देन यू काइंड ऑफ लर्न एज यू गो. पाकिस्तान में ड्राइविंग करती थी? पाकिस्तान में ड्राइविंग करती थी, लेकिन अच्छा सही है. पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस तो टेस्ट के बगैर ही मिल जाता है कभी कभार. नहीं आई एग्री, मेरे पास था, लेकिन मैंने भी मेन ड्राइविंग गाड़ी चलानी यूएस में आके शुरू की थी. मैं पाकिस्तान में चलाई थी लेकिन थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी. मैंने मेनली ज्यादातर गाड़ी चलाना मैंने भी यूएस में किया था. पहले मैं मोटर बाइक चलाता था पाकिस्तान में, तो आई हैड द सेम डिफिकल्टीज. लेकिन इवन जो पाकिस्तान से भी आते हैं, आई थिंक दे आल्सो हैव सम ट्रबल्स, क्योंकि रूल्स डिफरेंट है, लॉज डिफरेंट है, यू नो, तो आपको नहीं पता होता. सही है. तो इंटर्नशिप पहले दिन गाड़ी लग गई, फिर लेट पहुंची थी. फिर कॉल की अपने पास से. मैंने अपनी लाइक प्रोग्राम डायरेक्टर को तो कॉल नहीं की थी. एक लाइक एक कॉलीग थी, वन ऑफ माय लाइक अमेरिकन कॉलीग्स, उसको कॉल कर दी. मैंने कहा देसी कॉलीग को कॉल की तो जरा थोड़ा हो सकता है कि परेशान ज्यादा हो जाए. सो बट anyway, when I went there, everybody's like, "Oh my God, Saleena, are you okay? Are you okay?" And it was good to have that kind of support. Or I think that was also a way ke I knew okay, there are people, you know, over here that I can kind of depend on. So sahi tha khair. It was all taken care of. उसके बाद एक आधे एक्सीडेंट्स और भी हुए, होते रहते हैं कभी कभार, but that's fine. That सही है. was part of the learning curve. बिल्कुल. फिर ये कि once you get used to of living alone, it actually is actually a lot of fun. And especially as a female, once you move here and my parents are very liberal, even back home. So I come from a very liberal sort of family. Or even Pakistan में रहते हुए बचपन में, up till first year of KE, I don't know if anybody has heard of Adventure Foundation Pakistan, but I was a member and I used to go for like camping, trekking, or सारे इस तरह की trips. So उस तरह की बैकग्राउंड थोड़ी सी. सो आई हैड दैट काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था. लेकिन फिर भी यू नो इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू आर एक्चुअली लिविंग अलोन. बट ये है कि फिर जब आपको आदत हो जाती है, देन यू गेट यूज्ड टू कि अच्छा यार, कभी भी ड्राइव करके शिकागो जा सकती हूँ, कभी ड्राइव करके कनाडा जा सकती हूँ. सो it was nice. Like the last couple years of residency अच्छे गुजर गए. फेलोशिप का कभी सोचा ही नहीं. J1 था तो बस यही सोचा कि ठीक है, J1 का वेवर करेंगे, हॉस्पिटलिस्ट करेंगे, 1 week on 1 week off, just you know like a chill life and enjoy, or hopefully find something where us my husband can also be at. अच्छा, वो सोचने में बड़ा आसान लगता है, but finding a waiver is actually like a daunting task, I feel like. Because there is no database for J1 waivers. And if you have geographical limitations, then it becomes pretty challenging because aapko bas sabko, first you have to, you know, upload your CV on those practice link, practice match, all those websites. And then wo aapko itni emails aa jati hain, and then half of them, they are not even J1 jobs. So
then you have to kind of filter out, contact. They would sell you the place as, like a very metropolitan city, and then you go there and it's just a rural town where Mm-hmm. maybe like 2,000 people live there. So एक दो ऐसे interviews भी किए मैंने up north in Philadelphia, and I was just in a shock when I went there. I can't move over here. So बस फिर कुछ interviews वगैरह होते रहे. Finally, I found a position um, near Columbus, Ohio. So last year of residency में my husband had actually moved to Columbus. Mm-hmm. तो फिर Columbus, Ohio में एक जगह मिल गई. It was just like maybe 40 minutes from Columbus in Springfield, Ohio. And it was like a medium-sized hospital, and they were offering a J1 waiver as for a hospitalist position. Or वो मतलब I just kind of, the pay was really good. The group is called Apogee Physicians. They're actually a pretty good group, and they have waivers on other states too. Anyway, मतलब it all seemed too good to be true. मैंने बस sign up कर लिया. मैंने कहा अच्छा इतनी अच्छी pay है, and they took care of my license, DEA, सब कुछ उन्होंने वो कर दिया. But what happened is that particular year, Ohio State was making some changes to their waiver process. So the cycle never opened up. अच्छा, अब 2017 है, March 2017 आ जाता है, और Ohio की cycle अभी तक नहीं खुली हुई, और मेरा सब कुछ हो चुका है. मतलब I'm just waiting to submit my application. That's it. Now it's March. I'm graduating in June. So I was like, okay, now I cannot wait any longer than this, because what else am I gonna do? अगर आप अपना extend भी कर लो board के लिए, but it was just getting too uncertain, और फिर वो लग रहा था कि okay, no, I really need to make a decision and do something else. So उस वक्त I think my program coordinator, वो जब post match वाला वो जो list वगैरह भेजते हैं fellowships की, तो उसने भेजी हुई थी वैसी, मतलब they used to share it with residents regardless. So she had shared it with me as well. And I saw, okay, Ohio State has nephrology and geriatric fellowships available. So my whole family was like, nephrology karo. My parents-in-law are also doctors, anesthesiologist and a pediatrician. But I was like, अच्छा nephrology करूं, फिर nephrology का waiver कैसे मिलेगा? So I just wanted to be done with the waiver. That was my only focus in life. I feel like कि अच्छा बस waiver करना है और बस. So I was like, अच्छा geriatric. हाँ, बस के करके ना मतलब गुजारो इस time. हाँ, सही. So I just went for a geriatric fellowship. कोई zero interest के साथ, कोई शौक नहीं था करने का. कुछ मुझे कहा अच्छा ठीक है यार primary care type ही होएगी, तो it shouldn't be that difficult, which it wasn't. It was actually very nice and chill. I had my baby at that time too, end of my fellowship. So it was just a nice relaxed year. थोड़ी सी residency से आपको break मिलती है. अच्छा, but of course waiver का तो फिर भी लटका हुआ था. So अब एक साल तो मतलब उसमें I shouldn't say waste, because obviously education of any sort is never a waste. So फिर start किया waiver का search. अब hospitalist की शौक ज्यादा मुझे उसका inpatient का था. So I started looking for hospitalist again. But it wasn't just working out. Somehow, like I couldn't find a nice location which would fit me and also my husband. We tried a lot in Ohio area, like in Ohio area में फिर वो नहीं मिल रहे थे. Plus after the changes that they made, I guess उसमें उन्होंने primary care, then psychiatry, then addiction, then gynecology वो उसमें डाल दिए थे preference में, and then the hospitalist and specialist like काफी नीचे उन्होंने डाल दिए. Plus उस Ohio के experience already कर चुकी थी, so it was I wasn't very keen on staying in Ohio. So फिर खैर Resolve Physicians जो है, I signed up for that. Sure. That's mainly locums though, right? नहीं, Resolve Physician वो है वो जो आपके लिए search करते हैं, like yeah. So now they're charging an arm and a leg, but at that time they were charging $1,000 upfront, and then maybe like 7% of your first annual pay if they find a job for you, and maybe like 2.5% if you find a job yourself, but you're still using some of their resources. So
matlab, they were helpful. They found me a few places that I interviewed at, but nothing really came of those interviews either. So then I decided, okay, hospitals ka kuch nahi banne wala. I Mm-hmm. need to be in a big city because even if my husband changes his job from Amazon, he still needs to be, you know, like in a big company or something, and he can't go to even a slightly remote area. Like Grand Rapids was not a bad city, but yeah, कि job opportunities जब आप देखो तो non-physicians के लिए तो almost next to nothing. So इसी तरह कोलंबस का भी यही था कि अच्छा Amazon नहीं तो फिर और क्या. इसी तरह फिर और देखना शुरू किया. Then I just made my mind, which I guess was the most difficult decision for me. Mm-hmm. Again, zero interest in primary care, never wanted to come in primary care. But I was like, you know, अब waiver तो करना है. मतलब या तो पाकिस्तान वापस जाओ, or you just stay here and do your waiver. So I was like, okay, fine, I'll do primary care for 3 years. It's not a big deal. That's how I found this place over here in Boston. Basically, one of the recruiters reached out to me, and he actually uh, introduced me to the idea of an HHS waiver for primary care as opposed to the Conrad 30 cycle, which, you know, is time specific और उसकी time sensitive होती हैं सारी deadlines काफी. HHS waiver at that time was only for primary care. You could do it in a federally qualified health center or any other medically underserved or health professional shortage area, which, you know, would qualify. So, Tell us a little bit about this. Honestly, I don't know what is this. थोड़ा इस पे expand करो क्योंकि I don't know much about this. अच्छा. So HHS waiver जो है आपका Human Health Services Department, right? The HHS department, वो उनकी तरफ से है waiver, and it's basically geared towards primary care. अच्छा. और अगर आप किसी भी आपके गवर्नमेंट के आप कह लो या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सेंटर्स होते हैं हर जगह पे जो रेजिडेंसी में आपको बहुत बुरे लगते हैं बिकॉज वहां से जो पेशेंट आते हैं दे आर योर होमलेस पेशेंट्स विदाउट इंश्योरेंस. तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, राइट? सही. So all major cities have these community health centers which are funded by the federal government, and obviously the government wants you to come and work for them. So they offer waiver, which is called the HSS waiver, which is not time sensitive at all. You can apply any time of the year, and there's no cap, nothing. So it's not like 30 positions in a state. It's like pretty much unlimited. So और फिर आपको ये waiver consider होता है आपका. जी, आपका बिल्कुल normal Conrad 30 की तरह waiver consider होता है. And then you can apply for green card after 3 years? After 3 years, yeah. The rest of the process is the same. That you complete your waiver and you apply for your status change and green card. Thanks for sharing that. I didn't know about it. I guess a lot of people don't know about it. Maybe there's like a J1 visa waiver group काफी active है और अब काफी लोगों की बच्चों की knowledge increase हो गई है, लेकिन उस वक्त Conrad 30 का ही पता था, वरना फिर वो DRA और Appalachian Trail वो वाले waivers पता थे, but those are mostly like more rural and remote areas. So but this was like if you want to be in a big city, for instance, like I needed to be in a big city, so even hospitalists can be a little tough if you want to be in a major city. So this is a pretty good idea if you're not too opposed to primary care, because obviously this is mostly for primary care. Recently, last year they included some hospitalist positions in it, but I don't have too much information on that. So I guess for academic centers they might approve some hospitalist positions or something like that, or for community hospitals, maybe not for academic centers. Got it. तो अब कितना अर्सा हो गया waiver करते हुए? So मेरा waiver start हुआ था 2018 में. I was delayed a couple months because of credentialing, so I ended up starting in September 2018. Fellowship करके. HHS का एक और rule ये है कि you have to be within a year of your graduation. So you cannot do a 2-year fellowship and then go for it. For me, because it was a geriatric fellowship, it was 1 year. I just cut down my maternity break and just graduated on time. So I was able to go for the July 1st start date. However, the actual start date was September because of the credentialing delay. So जो local employer की credentialing होती है.
So September में start किया and then December में सोचा कि पाकिस्तान जाके H1B को stamp करा लेते हैं क्योंकि अब 3 years का stamp हो जाएगा आराम से, I'll be free to travel and everything. So I went to Pakistan in December or maybe January, I don't remember. 2019 में अभी 6 महीने हुए थे waiver start किए हुए. Went to Pakistan, got stuck there for 3.5 months. So बस I was gonna say I recommend everyone कि waiver पे ना जब तक हो to be very careful, you know, of traveling because of these reasons. सही है. अच्छा फिर क्या हुआ पाकिस्तान में? What did you do there? खाने पीने खाए सैरें की, relax हुई कि नहीं? It was more stressful. Sure, it was very stressful because 6 months into a new job and then you bought a house and you've just moved and I was like, okay, maybe they're gonna just lay me off and I won't even be able to come back. मतलब पहला महीना आप कहते हो बस आ रहा है दूसरे महीना आप कहते हो कि अच्छा शायद आ जाए. By the third month you're like, okay, I don't think so it's coming and I need to start looking at jobs in Pakistan and see what I need to do here. So मतलब लेकिन ये कि फिर anyway आ गया eventually. And my son at that time was just turning 1 and we celebrated his first birthday over there. Then I came back. So maybe it was just meant to be. Were you stuck there alone or your husband was with you? I was stuck there alone because my husband is a green card, but he applied for and got his green card after I had already entered the US on a J1. सही. तो मुझे तो फायदा नहीं हुआ उनके ग्रीन कार्ड का, लेकिन ये कि he got his green card less than a year from sponsored by Amazon. So he's actually going to be a citizen inshallah this month, next month. So yeah. So just so you know, as soon as your waiver is done, he can file for your I-130 and 485 at the same time. 3 महीने में you can get your green card. Hopefully, inshallah. Hopefully, that's the plan. inshallah. ठीक है. सही. तो फिर आपका visa आ गया and you came back and you resumed your fellowship training. Right? The waiver job. The waiver, yeah. So अब ये है कि because of that delay and then the initial 2-month credentialing delay, I'm obviously a little late. I should have be getting done by July this year, but I think I'm going to be done in December this year, hopefully, inshallah. So yeah, I mean, अगर उसको देखूं मैं तो 1.5 year delayed from करते कराते पहुंचते हुए लग गया time, but it's fine. Like इतना I don't really mind. It's fine. So it's interesting क्योंकि तकरीबन देखो जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें पहले जानता हूँ या नहीं जानता, मुझे नहीं पता होता कि किसी की स्ट्रगल्स और मिजरीज क्या हैं. एक बात है कि जो भी बंदा अमेरिका में सेट हुआ है, कहीं पहुंचा है ना, वो बड़ी स्ट्रगल से पहुंचा है. एंड आई एम काइंड ऑफ अम्यूज्ड बिकॉज यू टोल्ड मी कि भाई मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं, कुछ नहीं है उसमें. मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि इतनी तो चलो खैर. एनीहाउ, अब मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है? पहले मुझे ये बताओ कि you took 1 year or little less than that for the prep of your step 1, right? Step 1 की नहीं मतलब 9ish months I would say. So that is very good. I want to emphasize that part कि देखो जितने भी juniors सुन रहे हैं ना, that is exactly what you want to do, specifically now जबकि सिर्फ pass और fail हो गया, step 1 का course खत्म हो गया. Don't waste 5 years, 3 years, 2 years सिर्फ step 1 के पढ़ने में. That is a big waste of time. It's not worth spending that much time. और आपके सामने example है Saleena की कि she spent 9 months and got mashallah 258, 256, very good scores. और दूसरा फिर सीके के लिए what you also told me कि जून जुलाई में दिया था step 1 और दिसंबर में सीके दे दिया, तो less than 6 months में. That is exactly what you want to do. ठीक है कि सीके जो है 6 महीने में दो और अच्छा स्कोर लो, और उसके बाद ठीक है कोशिश करो CS अब तो निकल गया, लेकिन उसके बाद कोशिश करो कि सीके के फौरन बाद step 3 दे दो 1-2 महीने में. That is because क्योंकि सीके की और step 3 की पढ़ाई बहुत ज्यादा सिमिलर है. ठीक है. एक चीज जो जिस तरह कहते हैं ना, डोंट ट्राई दिस एट होम, तो व्हाट आई विल से इज कि जो सलीना ने किया था ना अपने पर्सनल स्टेटमेंट के लिए, वो प्लीज ना करना. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, that's not something you should be doing. You should write your personal statement 1 to 2 months before, get it reviewed by at least 5 to 10 seniors or at least 2 native English speakers. हम लोगों की इंग्लिश और एक्सप्रेशंस और सब चीजें काफी डिफरेंट होती हैं, तो मेक श्योर यू डू दैट. अब I want to ask you this question कि भाई, so you did your 3 years of residency alone, and you were never alone in Pakistan before. You briefly touched upon it. Like, and how tough was it to survive alone, especially during residency? So the first year was more tough than the rest of the 2 years.
and my parents, मतलब होता है ना कि parents वगैरह आ जाते हैं आपके पास रह लेते हैं. So my parents are all working professionals. My mom visited maybe once in 3 years. So और उसके बाद graduation पे आए थे, but that's obviously different rather than staying with you for a month or having home cooked meals ready इस तरह. तो काफी पहला साल मुश्किल लगा और फिर सारा back and forth. My husband used to drive and then you know लेकिन ये है कि we enjoyed a lot too. Lots of traveling क्योंकि उस वक्त कोई responsibilities as such नहीं थी, baby नहीं था. So it was okay. And then by the third year and like later in the second year, अकेले रहने की आदत हो गई थी, मजा भी आता था. मुंह उठा के शिकागो चले गए, मुंह उठा के like कनाडा भी ड्राइव करके चली गई अकेले. So it was kind of liberating too कि जी अच्छा पहले दिन एक्सीडेंट के बाद से okay now I can drive to all the way from Michigan to Canada on my own. So वो आपको confidence build होता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है. और अकेले रहने से बस ये होता है कि पाकिस्तान में कुछ एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि पाकिस्तान में हमें बहुत फैमिली सपोर्ट होती है. तो कुछ चीजें आपके लिए ना आसान हो जाती हैं. पढ़ना बहुत आसान हो जाता है. कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ पढ़ना है बैठ के सारा दिन 16 घंटे यूएसएमएलई की तैयारी करनी है. तो You live in a very sheltered and protected bubble. तो आपको वो जो जिंदगी की मुश्किलात होती हैं उनका कभी सामना ही नहीं होता. सामना ही नहीं होता. और मतलब आई एम प्रीटी श्योर के आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान में भी स्ट्रगल देखी है, बट like most of my friends that I knew or the kind of people I was hanging out with, हम सारे बड़ी protected वो थे. तो मुझे रेजिडेंसी में ना आके थोड़ा सा मुश्किल लगा कि अच्छा अब I need to take out time for research or fellowship application और तो थोड़ा सा मुझे I guess मैंने फिर सोचा ही नहीं. मैंने कहा अच्छा यार. So वो कह सकते हैं कि मे बी जब आपके पास सिर्फ एक ही काम करना हो ना कि अच्छा बस यही करना है, तो मे बी इट्स अ लिटिल बिट इजियर. तो लेकिन मेरा फोकस ज्यादा था कि अच्छा चिल करो, एंजॉय करो और जस्ट लेट्स नॉट गेट इनटू द रेस ऑफ achieving this or that. Or I never felt myself dragged by the pressure of my friends or family or like fear कि okay नहीं अच्छा सलीना ने तो अच्छा ये करना ही करना है ना, मतलब we expect her to do this fellowship or do that fellowship. तो मैंने कभी इस चीज को इतना वो लिया नहीं. मतलब अभी भी मुझसे पूछने के अच्छा फेलोशिप क्यों नहीं की, इतने अच्छे स्कोर्स थे, इलेक्टिव्स भी थे, ये सब कुछ था. तो दिल नहीं किया भाई. मतलब I and that's my message to a lot of other juniors या especially like females कि it's not necessary. मतलब there are some you could have different priorities in life and just because others want you to do it या आपके ऊपर मतलब आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है या मतलब आपके स्पाउस की एक्सपेक्टेशन है, that's really not the reason you should be going into this. Do it if you really love it, if you are passionate about a field. अगर आपको कोई अपना personal interest है, then sure. But I just want everyone to know that it's okay to be a hospitalist, be a primary care, be like in a mild, like a lighter fellowship even. So पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हम जिस तरह की आते हैं ना, खासतौर पे हम यही कि जो बच्चे हैं बहुत कम्पिटिटिव और बहुत एक दूसरे को थोड़ा सा लेट वो like I don't know what word to use. Best of the best, cream of the nation, yeah. So we have to be the better. Just to add to that, I think this is I'll take a break here and I want to add there this is an incredibly beautiful message that you gave, that it is important to be happy. और लाइफ में जो करो, जो भी करो, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए करो. और जरूरी नहीं है कि भाई हॉस्पिटलिस्ट या पीडियाट्रिशियन या इवन अगर आप हाउसवाइफ भी हो, अगर ये आपके ऊपर है. If you're happy being that, there is nothing wrong with anything. There is nothing wrong with being a stay-at-home dad. There is nothing wrong with cooking for your kids and taking care of your kids. चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो. तो ये जो बैरियर्स होते हैं, ये लिमिटेशंस होती हैं, ये आपकी अपनी सोच की क्रिएटेड होती हैं. और कभी कभार आप अपनी सोच की क्रिएटेड लिमिटेशंस और बैरियर्स को चेस करते करते अपनी लाइफ की खुशी खो देते हो. तो what Saleena said is exactly true कि अगर आप if you're happy being hospitalist, if you're happy being a housewife, if you're happy being not a specialist, that's all you need, right? We are chasing happiness. We're not chasing some professional accomplishment, because your happiness is not dependent on a professional accomplishment. It is dependent on contentment, right? Go ahead, Saleena. So because like medicine jo hai, that's or your profession, that's just a part of your life. Don't make it your whole life. Make sure that you're still taking time out for your family, your loved ones, and
अपने इस goal के अंदर, I mean, there are obviously people who can, manage everything, which is excellent. मतलब लेकिन उतने brilliant लोग अब हर कोई जरूरी नहीं है कि उस तरह हो. So if you feel like you need to give more time to your family or आपसे नहीं manage होता, so rather than ending up being a patient of depression or anxiety, or just take it easy, just don't let yourself be pressurized just by the societal expectations or the competition. Or तो मतलब I dropped out of that race शुरू में ही. मुझे लगा कि यार A levels में पहले इतनी मेहनत की, फिर एंट्री टेस्ट में इतनी मेहनत की, फिर यूएसएमएल में इतनी जो है 2 साल लगा दिए, तो जस्ट अब कुछ थोड़ा इंजॉय भी कर लेना चाहिए लाइफ को. मतलब यहाँ पहुंच के हैं, कर लिए, alhamdulillah, everything is fine. कोई husband has a job, so तो बस कभी You're इतना right. सोचा नहीं. Yeah, you're right. मतलब लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट बनना. लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना, सर्जन बनना, रेडियोलॉजिस्ट बनना नहीं. तो लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना, ज़हनी सुकून होना. और अगर वो आपको कुछ ना करके मिल रहा है, तो आप तो दुनिया के सबसे लकी बंदे हो. इतने लोग इतने बिखेड़े पकड़ते हैं उस प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए. आपको अगर उसमें खुश हो, तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है? क्योंकि एट द एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल चेजिंग, राइट? बिल्कुल. अच्छा, तो मूविंग ऑन, मुझे ये बताओ कि you did your residency alone without any family. So how much support did you have from your friends and your colleagues? I mean, it was it. I shouldn't say कि नहीं थी. I'm sort of a person who is a little hesitant to ask for help. ठीक है. So मैंने कभी, I'm always willing to help. I love doing that. So I feel like I didn't really reach out सही. to or gel in a lot with my, some of my even Pakistani seniors. So, लेकिन ये है कि I feel like they were all super friendly, supportive, and they were always there for me if I needed. But ये है कि शायद it was an inhibition that I've always had, and that's also another message for you. Reach out for help. Okay, कोई मसला नहीं है, मदद मांगो. मेरे जैसे ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और उस तरह हेजिटेंट भी ना हो. So I don't know if it's my over confidence or if it's my hesitation in general asking for help. कि other people may have good advice, other people may know things that you don't. So I feel like even जब residency का सारा जो application था ना, मेरा match वगैरह, didn't really ask for help. किसी कोई सीनियर से बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया. बस अच्छा जो एक प्रोसेस है बस वो कर लिया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ा forums पे. लेकिन ये है कि having those connections वो भी आपके बड़े important होते हैं बाद में later on. But even like if you're not looking for a connection, you should still maybe just just ask people. 10 लोगों से पूछो बेशक. 10 लोगों से नहीं पूछना तो at least have 2-3 people that you're gonna look for advice. Deep बहुत है advice, लेकिन ये है कि so I would say कि मतलब अच्छा टाइम गुजर गया. मतलब बहुत अच्छे हमारे जो हैंगआउट्स वगैरह होते थे, पाकिस्तानी गैदरिंग्स वगैरह, अच्छा गुजर गया. मतलब I have only good memories. I don't really have any bad memories as such. So just to add and just to clarify, I reach out to people a lot, and जिन लोगों से मैं as a medical student help ली थी ना, और वो लोग तब research कर रहे थे before residency, उनसे मैंने residency के लिए भी help ली, उनसे मैंने fellowship के लिए भी help ली, उनसे attending की job के लिए भी help ली. और ना सिर्फ ये, we are all still very good friends, we are in touch, we help each other. What I want to add is कि देखो, not everybody can be as lucky as Saleena was, and what I would suggest is कि देखो, especially if you're a girl, reach out to people. यहाँ पे US में इतना नहीं होता कि don't have that inhibition, that unfortunately a lot of females have coming from Pakistan. अपनी life में सब busy हैं, everybody has families, and it's not like, reach out to people. If you're not comfortable talking to men, talk to females. But do talk to people, because a lot of times, you won't be able to get any useful advice, and you won't be able to learn from other people's experience. मतलब आपके सामने खुद example है, so that Saleena, she's sitting in front of you sharing her experiences, and hopefully you can learn something from it. Exactly. And that is the whole point of it. So इसलिए reach out to people so that you can learn from their experiences and not repeat the same mistakes that they did. And that's the whole point, that Saleena is sharing her mistakes, her struggles. Sahi. Exactly.
Yeah. And Moving now on, obviously, go ahead. like with the waiver group है या जिस तरह और भी काफी online अब तो है Facebook पे groups. So it's much easier. I feel like even though I'm not that old, but still like 2013, 2012, maybe it was a little less easier too. लेकिन ये है कि अब तो it's not a problem at all. Just just reach out to anybody, really. So yeah, do ask for help. And if you want to ask me for help, I'm always available, as most of you know, जिन्होंने मुझसे कभी कुछ पूछा है कि तो do you mind if we share your email address? यहाँ पे हम description में डाल देंगे for anybody who is interested in reaching out. Sure, yeah, I don't mind. चलो सही, चलो good. तो please look in the description. I'll share her email address. अच्छा, एक comment मैं करना चाहता था कि waiver jobs जो है ना, मेरे experience में, they're always in the middle of nowhere. वो तमाम rural areas जहाँ की 1000, 2000, 3000 population है, वो उन्हीं में होते हैं. Unfortunately, इसीलिए that's what I tell everyone कि try their best not to do a J1 job. और अगर नहीं मिल रही तो फिर कर लो. So you got lucky Boston में you're doing a waiver job, right? So that is because of the HHS program, I guess. Right. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ अपनी looking at your journey, I was taking notes of what's relevant. So you took your maternity time at the end of fellowship. So with April 24, yeah. So I took 5 weeks of my vacation, जो आपके fellowship में allowed थी मुझे. I kept all of it for the maternity, and then so that's basically what I took. Or you didn't get any additional time for maternity. Additional नहीं लिया क्योंकि even a day additional, I could not have qualified for the HHS. So despite a C-section, just छोटी सी break लेके back to work. But my program director was very understanding, and she gave me like a research week just for me to sort of recover. So let's say कि अगर आप 8 weeks लेती and you needed an additional 3-4 weeks, would that have extended your fellowship? That would have extended my fellowship, or I would not have graduated in time, and I could not have done my waiver. सही, तो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड इट बिकॉज मुझे लगता है कि रिलेटिवली मैटरनिटी के लिए चीजें जो है पाकिस्तान में और बाकी यूएस के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उधर आसान है. यूएस में स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट इज वेरी टफ क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपको टाइम पर ग्रेजुएट करने देते हैं. यस यू कैन टेक टाइम ऑफ, लेकिन दैट एक्सटेंड्स योर ग्रेजुएशन डे. अगर जुलाई 1 में आप कर रहे हो और आपने 8 हफ्ते लिए हैं तो वो जुलाई 1 की जगह आपकी ग्रेजुएशन जो है वो सितंबर 1 हो जाएगी, 2 महीने आगे निकल जाएगी. तो बी माइंडफुल ऑफ दैट. ऐसे ना सोचो कि भी इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन यूएस में दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ मैटरनिटी लीव्स एंड इट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट्स इन आइदर या तो ग्रेजुएशन की एक्सटेंशन या आपको विदाउट पे टाइम ऑफ मिल रहा होता है. बिल्कुल बिल्कुल, या दैट्स ट्रू. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि योर सन इज माशाल्लाह 3 years old. या अच्छा, तो हाउ टफ इज इट being a working physician, working mom, doing a waiver job with a small kid? So I think I'm lucky to be doing this primary care job rather than a different waiver job, क्योंकि चैलेंजिंग होता है जब वो बच्चे को आपको डे केयर डालना पड़ता है. पहले तो यू हैव टू बी सुपर स्ट्रांग जस्ट टू डू दैट, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मॉम, भाई अल्लाह, डे केयर में डालोगे बच्चा, नहीं रख लो, ये वो दादी भी ये कह रही है, नानी भी ये कह रही है, all the aunties are saying that. So but you have to kind of take the decision and whatever suits you and your family. Every month बीमार और फिर छुट्टी लो, 3 दिन लो, हस्बैंड ने लिए, 3 दिन मैंने लिए, और फिर घर पे रखो. अभी as we speak, just 10 days ago he was hospitalized actually for a couple days. I'm sorry. And this 3 ER visits, 1 hospitalization, urgent care visits, all within last 4 months. तो इतनी छुट्टियां मतलब ये लेनी पड़ी हैं. Is he okay now? माशाल्लाह he's okay, and he's मतलब ठीक ठाक है माशाल्लाह बिल्कुल. लेकिन ये कि with the daycare, all textbook viruses, hand, foot, mouth, roseola, whatever you can think of, he got it. So very difficult, especially of your first 3 years. I'm hoping inshallah, and as everybody keeps on saying, things will improve once he turns 4. अभी मतलब 1 साल और है मुश्किल. So उसमें ये था कि प्राइमरी केयर जॉब में होने का, और स्पेशली एट अ फेडरल हेल्थ सेंटर, जो टाइम ऑफ है ना, if I calculate all the holidays, CME, it's up to 7 weeks in a year.
So that is unparalleled. Like you're not going to find 7 weeks off, maybe as a hospitalist, but then the weeks on are very tough. So वो आपको मिल जाता है. So it's not very difficult for me, especially outpatient में call करके कह देना क्योंकि I can't come today, so cancel my patients or send them to urgent care or have them see a different doctor. So I think that maybe अल्लाह मियाँ की तरफ से ही हुआ ऐसा कि I landed into this job and it turned out very well for me because with a small toddler, I feel like, and being alone when my parents cannot come and live with me even for like, a month or so. तो अब खुद ही करना है जो भी बच्चे का, तो it worked out. लेकिन ये है सही. कि हस्बैंड की जॉब भी काफी वर्क मतलब उनके जो आवर्स हैं वेरी डिमांडिंग आवर्स, समटाइम्स लाइक 8 बजे 7:30 PM, और जो Amazon में जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम है दैट्स हॉलिडे सीजन, सो दैट्स पीक. सो उसमें तो फिर खैर भूल जाओ कि अच्छा हफ्ते में शायद एक दफा मुलाकात हो जाए. Wow. अच्छा, तो पता क्या, I talk to a lot of physicians, especially physician moms or females जो हैं, और something that I notice, and we all need a little bit of reassurance, even as physician dads, we all have guilt of not being a good parent, a guilt of not being a good dad, of not being a good mom, and that is because you're not available all the time. School जाना है, daycare जाना है, कोई छोटी मोटी चीज करनी है, तो आपको you have to make time out for those, and sometimes you are not able to, and then you have that guilt. So how do you overcome a guilt like that? It's, I don't know if you truly overcome that guilt. Like Okay. even like Thursday mornings मेरी off होती है and I have to go to my evening shift at 5. Mm-hmm. So sometimes I send him to daycare on Thursday, sometimes I don't. I just keep him and spend time with him. So I just try to make up for it, I believe. If I work on a Saturday, I take the Friday off so that I can keep him home on a Friday and spend time with him. And then primary care mein, it allows me to modify my work hours. So I'm still doing a 40-hour work week, but I cut it to 4 PM rather than 5 PM as my other colleagues, and then just work an extra shift. So periodic, I can pick him up and bring him home, and we still have some of the evening left to, do any Mm-hmm. activity. Mm-hmm. You just have to sort of work around and just sometimes just, accept that guilt and live with it, really, because I don't think so that guilt is going to go away. No, I'm not ready to accept that guilt, please. मैं फाइजा के interview में we briefly talked about it, and my purpose के भाई, it's not the quantity of time that matters, it's the quality of time. And also because we have that guilt, we always try to make an extra effort to spend quality time together, right? Exactly. As compared to if you are a stay-at-home dad or stay-at-home mom, and nothing wrong with that, then there is like, mama to har waqt ghar pe hi hoti hai na, what's the big deal, right? So you are spending more time distracted with other stuff, TV dekhte hue, internet pe aur kamon mein, rather than trying to spend at least a little bit of quality time, 30 minutes to 2 hours with your kid, which might seem like a nahi, but sometimes it doesn't even happen. So it doesn't necessarily mean get the quantity of time, you have a lot of quantity of time, but you're not really spending the time with your kid. What truly matters कि आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो दिन में कि नहीं. अच्छा, मुझे ये बताओ कि you were living by yourself for 3 years जब रेजिडेंसी के थे. Did you ever cook for yourself? Yes, yeah. You did. सीखा था यहाँ पे आके. अच्छा, यहाँ पे आके सीखा था. That's what I was gonna go. तो पाकिस्तान में कुकिंग आती थी कि नहीं आती थी पहले? पाकिस्तान में तो अंडा बनाना आता था, चाय बनानी आती थी. सही है. How important do you think it is for both men and women to know a little bit of cooking, थोड़ा बहुत अपने सर्वाइवल के लिए जब वो यूएस है? I feel like कि क्रैश कोर्स कर लो थोड़ा सा आने से पहले, but सही उससे है. पहले it's not that important because I mean, if you can become a doctor and do surgeries and whatever, हाँ, cooking तो exactly. कुछ It's भी not that. नहीं है. It's not no rocket science. And now with YouTube and everybody, in fact, in pandemic में तो मैं अपने physician friends की जब Facebook या Instagram post देखती हूँ तो everybody has become a chef and they're sharing super cool um, things that they're cooking. I think cooking easy होती है. उसमें मुश्किल basically ये होती है कि पाकिस्तान में आपको घर के कोई काम करने की आदत नहीं होती. So There when is you a come on taboo a day, attached to it. it's just that it just takes time. Like you need to get used to of cleaning your bathrooms and
cook and then clean the house, or you can just leave it ganda manda, which some people do, but I don't. लेकिन ये है कि वो बस एक थोड़ा मुश्किल लगता है सारी चीजें जगल करना ना, फिर इकट्ठे मुश्किल लगती है, फिर घर की कदर भी ज्यादा शायद आती है कि पेरेंट्स ने बहुत That's true. किया हुआ था। तो मैं ना गंदा मंदा रखता हूँ सब कुछ, मुझे सफाई करने का बिल्कुल शौक नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, हाँ वो बस ऐसे गंदा मंदा ठीक है। लेकिन what's kind of funny is कि I never knew or even realized कि कितने ज्यादा हम लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कितने खास तौर पे लड़कों को, क्योंकि मैं लड़कों के साथ रहा था, कुकिंग नहीं आती। और फिर जो आपकी रिस्पेक्ट होती है ऐसे घर में जहाँ पे 5-10 लड़के और किसी को कुकिंग नहीं आती, and you are the only one who knows how to cook, तो I enjoyed that respect because I always had a passion for cooking। और मैं वो जी आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा हो गया यार, अम्मी के मुझे जो है पुलाव याद आ रहा है और आलू गोश्त आ रहा है, तो वो कौन सी बड़ी चीज है, लेट मी कुक इट, और घंटे बाद मैंने बना दिया। ओ हो, हाँ उसके बाद निहारी बनाना या कढ़ाई बनाना, ये छोट, तो उसके बाद जो फनी बात हुई कि ना मैं बर्तन धोता था, ना मैं सफाई करता था, ना मुझसे ग्रोसरी के को पैसे ले रहा था, मैं वीवीआईपी था, जो मैंने कहना है जो बेस्ट रूम था वो मुझे मिल रहा था, सारी मेरी इज्जत, क्योंकि उम्र जब तक है तब तक मेन घर की कुकिंग हो रही है, उम्र चलेगा खाने भी बन रहे, मेन तो यही था ना कि, और मैंने क्या, अच्छा आप 2 प्याज काट लो, आप भाई 3 टमाटर काट लें, हरी मिर्चें आप जाके दही लें, आप ये कर लें, मैं कर लूंगा बाकी, मैंने सिर्फ आके हरी मिर्चें डालनी, प्याज डालना और करके। तो आई जेन्युइनली फील कि इट्स एन आर्ट एंड आई वांट टू ट्रूली ब्रेक दैट टैबू कि भाई अगर आप अपने घर के काम करते हो, अपनी सफाई करते हो, अपने लिए खाना बनाते हो, तो दैट्स एन आर्ट एंड दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज यू आर एक्वायरिंग दीज स्किल्स ऑफ लिविंग बाय योरसेल्फ। But exactly, and especially for men. So मतलब if you can do that, तो मतलब आप क्या करोगे अगर if you ever end up, especially if you're going to be here in the US for a long time, if you end up here 78-year-old and you don't know how to do these things and living by yourself, so what are you going to do? And that is irrespective of gender, right? जो भी हो, अगर आपको लाइफ में अकेले रहना है तो you want to have a healthy life, eat healthy and live healthy, right? If you're only surviving on junk food from outside, that's not healthy in any way either. All right. Eventually सीख लेती है ना, क्योंकि societal expectations हैं, थोड़ा देसी mindset है, अपने पेरेंट्स ने आना है तो इनकी expectation है कि कुछ तो बना के खिलाएगी हमें। Yeah, हाँ ये भी है ऐसे, you're right. तो husbands, मेरे हस्बैंड कर लेते हैं जरूरत के मुताबिक, बल्कि वो तो सबको यही कहते हैं कि मैंने सिखाया सलीना को, बट दैट्स प्रॉब्ली नॉट ट्रू। बट जिस तरह आप बता रहे हैं, भाई मेरे वैसे कुकिंग करते हैं कि बस पूरी 50 लोगों की पार्टीज को भी खिला दिया कुकिंग करके खुद। लेकिन you know what's funny, you said that, right? So I say that all the time, exactly that, and I should meet your husband because I say that all the time. I train my wife how to cook, send me a like that's not true either. She knew some stuff before, or she excelled it afterwards. So moving on, did you witness any lack of opportunities or faced any special challenges as a female? I would say no. And I think that, however, is kind of specific to my case because इतना कोई उस तरह की मतलब ज्यादा आई फील लाइक कम्पिटिटिव फेलोशिप्स में शायद जरा ज्यादा होता है क्योंकि मेल डोमिनेंट फील्ड्स हैं, पल्मोनरी केयर, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो जाए। सो as just for like for hospitalists या primary care, it's not really. In primary care, the clinic I'm working in is maybe we have like 2 male doctors, so it's a female dominant field anyway. So maybe as a female, no. However, ये जरूर कहूंगी कि अनम ने भी बल्कि ये नोट किया था अपनी उसमें इंटरव्यू में कि if you're a female Pakistani female and you are confident or you're just expressive, तो वो जो टोन डाउन वाली उसको कमेंट मिली थी, वो मुझे भी बड़ी दफा मेरी अटेंडिंग से मिली कि you are too dominating and you need to, it may come as it like as very rash or whatever. तो वो मिलती थी, पाकिस्तानी अटेंडिंग से भी मिली, ओनली देसी से या गोरे अटेंडिंग से भी शिकायतें लगाई कि ये बहुत अच्छा बड़बोली है एंड ऑल दैट। So was it only from desi attendings या गोरों ने भी कहा? Desi, मतलब वही, I think that's unfortunately the male chauvinist mindset, right? It's very tough for us to accept an extrovert woman. It's okay to be an extrovert man, but it's not okay to be an extrovert woman. And that's why we are doing this and hoping to change those taboos and shackles, break those shackles. कभी-कभार होता है कि if you have all those males around you जो आपके
it gets a little difficult to ask for help because they're judging you. they're judging you. अच्छा वैसे तो इतनी बनती हो, अच्छा ये मुझसे क्यों पूछ रही हो फिर टाइप ये. Mm-hmm. Thanks for sharing that. And that's what it is, you know. I think we should leave that mindset and try to progress from it, you know. And if you're a male listening to this, please don't do that. Chalo, to mujhe ye batao, so you took your final year exams in 2010. ठीक है? The year is 2021 right now. 11 साल हो गए और अभी इस साल waiver का job खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. Past 11 years, do you think it was all worth it? I think it was all worth it. मतलब और क्या करना था? सही है, चलो, nice. मुझे ये बताओ कि I know you go back and travel, but overall, do you ever feel homesick? I actually have not been able to travel because जब मैं 3.5 महीने के लिए stuck हुई थी, उसी year rule change हो गया था that Pakistanis are only gonna get 1-year visa. So I went there, I got stuck there for 3.5 months. I came back and then my visa was क्या थोड़ा सा रह गया था बिल्कुल. So it expired in April of 2020, and since then I actually haven't been traveling at all. So I just So do you miss Pakistan? I do miss Pakistan a lot. I haven't seen my parents in over a year, and What do you miss the most? My mom, obviously. Lekin just being at home with family, sorry, get-togethers or khana pina, shopping, kapde pehna, dress up hona. Sahi hai. Acha, what do you think helped you the most in your journey in past 11 years? Past 11 years, मतलब alamiya or namaz और वो सब के अलावा, I think my husband, definitely. And my my parents, or ये कि again like I said कि I think what helped me कि मैंने पहले भी mention किया कि I never let myself be dragged by other people's expectations. I was doing whatever I was doing just for myself, और बस जो मुझे लगा कि अच्छा, बेशक बाकियों को लगे कि अच्छा यार अपनी लाइफ वेस्ट कर दी इतना पढ़ के, लेकिन मुझे लगा कि this is easy, this is I'm gonna simplify my life. And I made that decision and I just kind of stuck with it, or say look back nahi kiya. Maybe 5 years from now this may change, I might want to go back into something, but ye ke abhi बस मुझे वो सिंप्लीफाई करके ना थोड़ा आसान लगा कि अच्छा ठीक है, अपनी जिंदगी को सिंपल कर लो, इतनी चीजों के पीछे मत पड़ो, और जो है just at hand just focus on that. So that I feel like was kind of easy. और बाकी है कि family support और दुआ और सब कुछ, वो तो I guess everybody does that. So good. तो पता क्या मतलब I agree, spouse support is probably the most important factor in this entire journey, and it is incredibly important. I don't know, it's a little controversial, but I also feel, and I've talked to other physicians, unfortunately we physicians have very busy and stressful lives most of the times because we are chasing big, high-end competitive specialties, and we're so busy. And because we're also living very stressful lives, we end up not being very supportive and available to our spouses at times. But it seems like in your case, your spouse was also pretty busy too, right? It wasn't. He's still very busy. Yeah. तो मतलब खास तौर पे I've noticed कि जो कुछ मतलब जिन लोगों की stay at home husbands हैं या stay at home wives हैं, उनको बहुत support होती है. लेकिन with you it was even more challenging because your husband was equally busy or even more busy, right? Even more busy sometimes, and then obviously मतलब कभी कभार आपको feel होता है कि okay, I am kind of modifying all my life according to him or to support his profession. लेकिन ये है कि these are some of the sacrifices that you make to build a relationship, to continue a relationship, or again like I said, medicine is just a part of my life, but my actual life is my husband, my kid, my family. So सब कुछ बैलेंस करना होता है, आपको अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है, सब कुछ करना है. So for me I feel like कि मेरे लिए अभी जो है ऐसे things are working out well. I'm there for everybody. So so that gives me more peace and happiness, alhamdulillah. सही. तो मुझे go ahead. Sorry, go ahead. No, I'm just gonna say कि और दूसरा ये भी है ना कि like उसके for my husband, like working at Amazon is like Harvard का
आपको रेजिडेंसी या अटेंडिंग को ये तो नहीं कहेगा ना छोड़ के कुछ छोटा मोटा कर लो। तो वो ये भी फैक्टर था कि अच्छा वो तो है, उसका तो सब कुछ सेटल्ड है, ही इज ऑलरेडी देयर इन हिज करियर, आई एम हियर, सो यू नो एटलीस्ट वन ऑफ अस शुड बी excelling. So maybe that's what I did. I was like, अच्छा ठीक है तो करो, लेकिन ये है कि with that also comes a responsibility कि अगर आप as a female, if you want कि आपने भी आगे मतलब if you want to be the प्रायोरिटाइज पर्सन कि अच्छा आप नहीं, आपने जो करना है वो करे और बाकी आपके हस्बैंड आपके मुताबिक मॉडिफाई करे, देन यू आल्सो नीड टू बी विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल आप दोगे, मोर्टगेजेस आप दोगे, और फिर सारे फाइनेंशियल जो भी है वो फिर यू आर गोना बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर यू नो विलिंग टू डू दैट, देन श्योर। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि हाँ जी बस मैंने ये सब कुछ कर लेना है और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने नहीं करनी, वो फिर भी हस्बैंड से करानी है, देन थिंग्स आर नॉट गोना वर्क आउट। Well, thanks for sharing that. Thank you very much for that. So moving on, मुझे ये बताओ, what hindered the most in your journey? मुझे लगता है वीजा। अच्छा सही है। जितना J1 वीजा को मैंने अपने सर पे सवार किया ना, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा, कभी कभी जो भी गुस्सा भी आता था, जो थोड़ी डिप्रेशन होती थी, वो ज्यादातर इट्स जस्ट द वीजा कि यार क्या मुसीबत है, हस्बैंड ग्रीन कार्ड है, सिटीजन हो जाएगा, सारे फ्रेंड्स का H1 है, एक लाइक मैं एक J1 पे फंसी हुई हूँ, एवरी ईयर आई यूज्ड टू गो टू पाकिस्तान गेट इट स्टैम्प्ड। फिर फिर जब फेलोशिप में तो इनफैक्ट आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, और फिर ये कि H1B के लिए गई तो फंस गई, तो वो वीजा का। और फिर ये कि मतलब काफी सारी डिसीजन, बस अच्छा जी J1 वीजा वेवर ढूंढना है, वेवर करना है, खत्म करना है। So yeah, that was kind of also limited my options थोड़ा सा कि even आप मतलब आपने हॉस्पिटल से प्राइमरी केयर भी करना हो, so that with a waiver you have very limited option like Brigham and Women या बेथ इजराइल हार्वर्ड के हॉस्पिटल प्राइमरी केयर छोड़ के आप एक फेडरल हेल्थ सेंटर में कर रहे हो, सो it's it is definitely a limitation. सही सही। Yeah. तो मुझे ये बताओ क्विकली, सो जो फेलोशिप थी, is that helping you in any way, like, or It your is fellowship? definitely helping me because अच्छा in fact I'm right now I have a alhamdulillah $40,000 grant from Mass Health League of Community Health Centers that I'm working on for a memory clinic at my health center right now. So very it is nice. definitely helping me. Yeah. ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता, मतलब what would you tell them कि just because it's not a very developed specialty in Pakistan, if you don't mind sharing कि ये specialty क्या है, तो please go ahead do that. So geriatric medicine is I guess older people, for older people above 65. बाबों की मेडिसिन, मेरे my dad and my dad-in-law मुझे छेड़ते हैं कि बाबों की मेडिसिन कीवी है। सो यहाँ पे ज्यादा उसका फोकस यही है कि आपका लाइक कॉग्निटिव असेसमेंट और पॉलीफार्मेसी, फॉल्स, रिस्क असेसमेंट, तो थोड़ा सा जेरियाट्रिक फोकस केयर हो जाती है। उसमें आप प्राइमरी केयर भी कर सकते हो कि यू कैन बी द प्राइमरी केयर physician for those geriatric patients. You can do nursing homes. You can be a medical director in a nursing home. You can do just like memory clinic. So it's just a 1 year fellowship, or it's mostly outpatient based. उसमें outpatient and then nursing home rotations होती हैं, और कुछ inpatient consultations भी होती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा inpatient geriatric teams का भी है ट्रेंड, स्पेशली लाइक ऑर्थोपेडिक वाले करते हैं geriatric, उनका अपना geriatric hospitalist होता है कोई ना कोई for the pre-ops for patients undergoing hip replacement, knee replacement and all that sort of stuff. So पाकिस्तान में applicable कितना है at this point I don't know, because community support कोई नहीं है ना वहाँ पे, कोई rehabs नहीं है वहाँ पे, मतलब आपके nursing homes, long term care कुछ नहीं है। So but over here it's definitely like up and coming, I would say, because मतलब जिस rapidity से geriatric हमारी population बढ़ रही है, so eventually I guess 10 years from now, if anything, this is probably going to help me. It's not going to be something that ये अच्छा साल ज़ाया हो गया। कुछ it's pretty nice, मतलब उसमें कोई इतना difference नहीं है primary care से, but it's just that you can get rid of वो जो younger like pap smears and all that sort of boring primary care stuff. So yeah, सही। and you can choose if you want to do
the primary, or if you want to just be a consultant. फिर आपके consults मतलब ज़्यादातर वही memory assessment, polypharmacy and these kind of things. ठीक है. और दूसरा, moving on, मैंने ना काफी सारी वीडियोस बनाई थी सारी गाइडेंस के लिए, और सबसे ज्यादा व्यूज इस वीडियो को मिले कि पैसे कितने कमा लेते हो. So because of that, I'm going to ask you, what is the nationwide salary range in your specialty, the lowest and the highest, and what are the factors that impact it? So primary care में जो obviously pay नहीं है, I would say definitely. इतनी कोई highest maybe जिस तरह मैंने interview किए थे एक I forget the name of the group exactly, but उनके senior care clinics थे, so 55 and above only. So they were offering maybe 250s. Wisconsin में कुछ primary care group में interview किए थे 230s उनकी थी. लेकिन ये कि as an academic primary care physician, you're in a big city probably going to start like maybe 175, 180, जिस तरह Ohio में जहाँ पे मैं कर रही थी. अच्छा, that's not bad. I thought it would be more like 130, 140. नहीं? नहीं 130. अच्छा, बड़े शहरों में. Yeah. अच्छा. और ये कि और obviously community health center में आप आ जाओगे तो that फिर वो उसकी location और उस पे depend करेगा. Maybe if you're in Wisconsin in a community health center, it might still be pretty like 180, 170, but obviously Boston में तो ऐसा नहीं है. Boston में ज़्यादा कम है. बड़े शहरों में और academic centers में salaries कम होती हैं. So from what I'm getting from you is it ranges between 160 to 280, something like that, right? 250s, yeah. 250 तक. And that is a range if you're employed. I would add, I know primary care physicians who make more than $1 million, but they make more than $1 million because they own their practice. Exactly. तो सब कुछ उनका अपना है, right? Yeah, exactly. सही. तो मतलब I hope that gives some answer उन लोगों के लिए कि जो सोच रहे हैं. If you own your own practice, you just have to deal with a lot more hassle, staffing की, pay देना है staff को, ये वो सारा, तो बखेड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन you make more money and you're your own You boss. make more money, yeah. और वो अगर आप रूरल होते जाओ तो और ज्यादा होते जाएंगे. हाँ, जितना रूरल होगा, जितने बड़े शहरों से दूर जाओगे, जितना नॉन एकेडमिक सेटिंग में जाओगे, उतना इजी होता रहेगा, मतलब सैलरी ज्यादा होती जाएगी. अच्छा, हाँ, तो when did you come for the first time? When did you travel outside Pakistan for the first time? Traveled outside Pakistan independently was 2011 for my जो electives के लिए आई थी. electives के लिए आई थी, बिल्कुल. सही. तो मुझे ये बताओ कि जब electives के लिए नई आई थी, तो how much of a difference did you feel कि जो हम पाकिस्तान में इंग्लिश बोलते हैं और जो अमेरिकन इंग्लिश थी, did you have any troubles adopting to the American English या नहीं? I don't think so. I've still adopted to the American English. मैंने अपना देसी accent ही रखा हुआ है. तो लेकिन ये कि not really for me, but then again it's a little different for me because I did O levels and A levels. So उसमें थोड़ा सा maybe a little bit of difference आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि English जिस तरह हमने O levels में not in A levels but O levels में पढ़ी होती है, वो थोड़ी सी different than English आपकी जो FSC की. और मैंने वो जो KE में भी एक English का एग्जाम दिया था. KE में कौन सा English का एग्जाम? KE में उन्होंने कोई English का एग्जाम दिया था और उन्होंने कोई BSc की डिग्री देते हैं आपको. Oh, अच्छा. No, I didn't even bother doing that. That was my experience of the English जो आपकी दूसरे उसमें FSC. But that doesn't help you in any way. Like, जो practical English है अमेरिका आके, right? It doesn't really. तो मैं वैसे कह रही हूँ कि वो English में थोड़ा सा मतलब difference था definitely, लेकिन ये कि बोलने के अंदर इतना मुझे American accent जब मैं अटलांटा में electives किए थे, क्योंकि Southern accent is very different, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता था. और residency में initially आके maybe a little bit आपको थोड़ा सा मतलब ये होता है कि sometimes explanation of medical things in a simple language to a native English speaking person can be a little bit difficult, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि you have to use scientific jargon and then you're trying to struggle कि what phrases should I use that they're gonna get. हमारी ना थोड़ी सी flowery English होती है. We are used to a British English और हम लोग बड़े complex sentence structures use करते हैं. तो मैंने अपनी emails वगैरह में भी देखा कि कभी मैं email अपने भेजूंगी अभी तक
तो बड़ा एक पैराग्राफ होगा, वही और ईमेल पैसिव अगर, वॉइस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं rather than एक्टिव वॉइस as compared to और American उनका English. आएगा तो एक सेंटेंस के अंदर जो बात कहनी थी कह दी। तो अब थोड़ा समझ आ गई है कि कैसे उसको आपने लाइक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल वर्ड्स यूज करो, कोई मुश्किल वर्ड्स अपनी I'm थोड़ी glad सी। you shared that because what I would like to add is कि देखो, अगर खास तौर पे उनके लिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है और उनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, देखो वो सबको होती है। आपके सामने सलीना है, सलीना डिड एन ओ लेवल ए लेवल्स, और वो आपके सामने विलिंगली एक्सेप्ट कर रही है कि उसको भी प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, मुझे भी हुई थी, हर एक को होती है। एंड आई वेंट टू प्रीटी गुड स्कूल, मैं सारी जिंदगी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। जो भी इंसान अमेरिका में फर्स्ट टाइम आता है, इट इज नॉट कि आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं, इट इज मोर अबाउट यू आर अडॉप्टिंग योरसेल्फ टू अ न्यू एक्सेंट जो पहले कभी सुना नहीं है, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए। सुनने और के फिर लिए। you don't even need to try super hard to switch your accent. बोलो जैसे बोलना है बोलो, ठीक है, अपने जिस मर्जी एक्सेंट से बोलो, चाहे हैवी एक्सेंट में बोलो, nobody cares. What Nobody truly cares. matters कि अगला बंदा अगर आपको कोई बात बोल रहा है उसकी समझ आ जाए, और अगर नहीं समझ आए तो उसे एक्सक्यूज करके बोलो, sorry I didn't get you, can you repeat that again please. Yeah, exactly. So अब लेकिन ये है कि now the patients that I'm seeing are 80% non-English speaking. So I actually अच्छा, work a lot with interpreters या language line services. स्पेनिश तो होते हैं? स्पेनिश भी है, वियतनामीज मोस्टली एजियन। अच्छा, interesting, सही। अच्छा चलो, तो moving on, what's been your biggest challenge that you overcame in this entire journey in past 10-12 years? छोटे छोटे बहुत सारे challenges थे, I would say. I guess biggest challenge initially was making the decision to come into primary care ठीक because है। बिल्कुल like I said, I was really not interested. मुझे inpatient बहुत पसंद था. I feel like even during my residency, I would be the happiest when I was inpatient. लेकिन हमारी रेजिडेंसी वैसे थी थोड़ी प्राइमरी केयर फोकस्ड काफी थी, हमारा क्लिनिक आई गेस रेगुलर रेजिडेंसी से थोड़े से ज्यादा उसमें थे। वी आल्सो हैड लाइक अ मंथ वे ऑफ एम्बुलेटरी एंड एन एम्बुलेटरी इनपेशेंट सर्विस टू। सो बट इट वाज इनिशियली अ लिटिल चैलेंजिंग कि अच्छा अब इनपेशेंट भी नहीं करने की जगह अब नाउ यू डिसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ योर वेवर, नॉट रियली प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट कि okay, let's just go for a PCP waiver. So I think that's been the biggest challenge, but I think I'm fine, alhamdulillah, happy. सही है। तो मतलब just to clarify for those who are completely naive and don't understand, अमेरिका में ना हॉस्पिटलिस्ट होता है एक ऑप्शन, और एक प्राइमरी केयर होती है आफ्टर यूर इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी। प्राइमरी केयर वही होती है कि जिस तरह पाकिस्तान में आप ओपीडी में आउट पेशेंट क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हो, तो पाकिस्तान में इट्स कंबाइंड के वही लोग शाम को इवनिंग ड्यूटीज देते हैं वार्ड्स में। अमेरिका में बिल्कुल सेपरेट है, जो वार्ड ड्यूटीज हैं इन पेशेंट्स वो ज्यादातर हॉस्पिटलिस्ट होते हैं, वो अलग आप इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी करते हैं, और उसमें कुछ प्राइमरी केयर भी आप थोड़ी बहुत रोटेशंस करते हो जिसमें आप क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हो यानी ओपीडी में देखते हो। तो जो डॉक्टर जिस तरह सलीना है, राइट, शी इज ओनली सीइंग पेशेंट्स इन द क्लिनिक, वो हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स नहीं देख रही, तो उसको हम प्राइमरी केयर फिजिशियन कहते हैं। ज्यादातर लोग जो इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी करते हैं वो हॉस्पिटलिस्ट करते हैं, और प्राइमरी केयर भी कुछ कुछ लोग जो प्राइमरी केयर करना चाहते हैं वो ज्यादातर फैमिली मेडिसिन की करते हैं। लेकिन इंटरनल मेडिसिन का फायदा ये है कि यू कैन आइदर डू अ हॉस्पिटलिस्ट जो कि इन पेशेंट ओनली है, और यू कैन डू अ प्राइमरी केयर जो ओपीडी वाली है, जो कि सलीना कर रही है। ठीक है, तो सलीना मुझे ये बताओ, मूविंग ऑन, इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, let's say somehow you are able to go back to KE 2008 2009 का जमाना आ गया, you have to do this all over again, what would you do differently? What would I do differently? I guess I don't know, maybe I would like step 2 before step 1. जब आप अपने मुझे स्टेप 2 की तैयारी करके लगा था कि it was fairly easy, और Sure. अगर even आप step 1 is not a prerequisite for it, I felt like that, but maybe other people feel differently. So maybe personally I would have taken step 2 earlier on, और वो शायद जल्दी हो जाता, और उसके बाद फिर step 1. So I would have applied a year earlier. I would have wanted to do that. The other thing is कि थोड़ा सा like जब मैं आई थी ना, I did not even know कि फॉर इंस्टेंस इमरजेंसी मेडिसिन की भी कोई रेजिडेंसी होती है। मतलब मैंने तो बिल्कुल इतना अपना वो किया हुआ था ना, लाइक आई सेड कि पूछा कभी किसी से कुछ था नहीं जिंदगी में। सो आई न्यू कि अच्छा ठीक है, सर्जरी होती है, आईएम होती है और गायनी होती है, तो सर्जरी नहीं करनी, गायनी तो वैसे ही बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो बस आईएम कर लेते हैं।
तो ये है कि अब ऑब्वियसली बच्चे जो आ रहे हैं, they're much more well informed than I am, and just just weigh all your options, think what you really want to do, go for even जो आपको difficult लगती हैं, मतलब माशाल्लाह you're in radiology, right? So आप anesthesiology, radiology, EM, IM, pediatrician, whatever, तो आप अपने देख के करो, सोच के करो, not just because अच्छा लोग USMLE करते हैं, अमेरिका जाते हैं और IM की रेजिडेंसी करते हैं। तो मेरा थोड़ा-सा आई वुड से कि वो एक था कि sort of following the mob के हाँ, बस ये कर लेते हैं चलो। So I would Yeah, do also that. look at the paths less traveled, और लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो पहला मेरा इंटरव्यू था, दूसरा या पहला हसन अजीज के साथ था। He's a transplant surgeon. I interviewed a colorectal surgeon, और भी लोग हैं। I have a cardiothoracic surgeon. I will interview him in next few weeks. I am interviewing a girl who's an emergency medicine resident in next couple of days. So that is the whole point कि awareness आए कि नहीं मिलती नहीं है। My own wife is a radiology resident. So you are saying कि भाई कि नहीं मिलता ही नहीं है, तो if you won't even try, how would you get it? How would you get it? बिल्कुल। तो वो उस वक़्त इतना सोचा नहीं। पहले रेज़िडेंसी के पहले साल में बल्कि जब ईएम की इंटर जो होती है आपकी रोटेशन, तो ईएम के प्रोग्राम डायरेक्टर ने कहा कि तुम इंटरनल मेडिसिन में क्या कर रही हो? स्विच करो। तो लेकिन फिर वो J1 की वज़ह से सोचा नहीं स्विच करने का, बट थोड़ी-सी पुश थी कर लो स्विच। तो अब मैं सोचती हूँ कि हाँ यार, अगर पहले थोड़ा पता होता तो मे बी आई माइट हैव चोज़न समथिंग डिफरेंट, और या ये है कि एटलीस्ट थोड़ी ऑप्शंस रखी होती ना कि अच्छा ये सोच के किया होता है। ये नहीं बस किया होता कि अच्छा अंधाधुंध फॉलो किया कि यूएसएमएल ही करते हैं और आईएम की रेज़िडेंसी कर लेते हैं। तो सही सही। या उसामा का इंटरव्यू देखा था, उसामा पाशा का। He did EM अ, residency on H1. तो देखो, या और वो भी मतलब he is the one, बिल्कुल। he did it, और उसकी वाइफ नहीं कर रही है, तो मतलब वीजा भी आपको EM के साथ भी मिल सकता है। अच्छा, इंडीड। and I'm so sorry, I have to say this. 1.5 साल में स्टेप 1 और स्टेप 2 सीखे कर लिया, और उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? मैं उससे कम में भी कर, मतलब हाउ ऑन अर्थ, इससे भी क्या। फिर उसके बाद अगर साल में कर लिया होता तो देन यू वुड हैव सेड 6 महीने में दोनों। आई थिंक दैट वाज एज लाइक, इससे ज्यादा तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, नहीं? अगर इससे भी जल्दी करती, 1.5 साल से की जगह साल में कर लेती, तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता। सही। अच्छा, अब एनी एडवाइस फॉर पीपल इन योर शूज 10 years ago? कोई फाइनल ईयर का बच्चा सुन रहा है आपकी बात, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, व्हाट वुड यू टेल देम टू डू, और दे वांट टू परस्यू यूएसएमएल, स्पेशली फॉर फीमेल्स, व्हाट वुड यू टेल देम? What would I tell them? So again ये है कि आजकल because it's become even more difficult कि आपका जितना गैप होता जाता है, maybe it's a little more challenging. So try to give those exams. Like पढ़ो उनके लिए, इतनी मतलब मुश्किल है for sure. मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़े कोई आसान थे। जब स्टेप 1 की बायोकेम पढ़नी पड़ती है तो पता जाता है। बट ये है कि अपना अगर साथ-साथ कर सकते हो थोड़ा-थोड़ा, इफ यू आर रियली मोटिवेटेड कि आपने यूएसएमएल ही करनी है, देन जस्ट पढ़ना शुरू कर दो, और उसके लिए आप अपना as soon as you can take them, just take them. और ये है कि 2 बोट्स में सवार होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बीच में हाउस जॉब भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ यू वांना टेक यूएसएमएलई, आई थिंक यू शुड जस्ट काइंड ऑफ स्टिक टू दैट, दो जल्दी, एंड देन ट्राई टू कम हियर। रिसर्च इलेक्टिव्स कैंट मतलब डेफिनिटली सो इम्पोर्टेंट। अब रिसर्च मेरे टाइम पे मे बी थोड़ा बहुत आपको फिर भी मिल जाता था, बट आई फील है कि अब जितना कम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो रिसर्च करो। पाकिस्तान में वो कम्युनिटी हेल्थ वाली रिसर्च नहीं, लाइक समथिंग बेटर, एंड आई एम श्योर नाउ देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैं देखती रहती हूँ कि उन्होंने नए जर्नल्स भी बना दिए हैं वेयर यू कैन पब्लिश, वेयर यू कैन सेंड केस रिपोर्ट्स। तो रिसर्च है, इलेक्टिव्स ट्राई करो। इलेक्टिव्स का ये भी फायदा होता है कि यू कैन कम हियर, यू कैन लिव हियर, यू कैन लिव हियर फॉर अ मंथ और टू इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, एंड यू कैन जस्ट कैन टू you can get to know about the lifestyle here. आपको पता चल जाता है कि is it really something that you wanna even do? Maybe आपको लगे कि नहीं यार, ये अमेरिका तो बड़ी बेकार जगह है, मुझे नहीं रहना यहाँ। तो then you can change your mind. Or again, don't be hesitant to ask for help. Ask help from tons of people and ask for their advice. और ये है कि just weigh your options. बस just don't follow the mob के यही करते हैं ज्यादातर लोग, तो मैं भी ये कर लेता हूँ। Just weigh your options and try to decide what you really want for yourself. Sometimes you might not know. I feel like I still don't know कि क्या चाहिए, लेकिन ये है कि I think the more you weigh your options, so आप कर सकते हो decide. फिर
then I challenges हैं अब simple भी आप कर लो अपनी life फिर भी उसके अंदर जो challenges आने हैं वो आने ही हैं. That's just something, that's what life is. So just, don't let them get to you. Get back up and just, be जो है persevering होना चाहिए कि आपने, if you have to achieve a goal, then what you need is like perseverance. So yeah, just be there and just अपना decide करो and then just go get it. Thank you very much. So couple of clarifications really quick जो हम लोगों ने सारा किए. एक तो सैलरी के जो numbers बताए थे ना सलीना में, keep that in mind कि इसमें से 40% आपका टैक्स निकलेगा. 35 to 40% टैक्स निकाल लो, पीछे आपकी मंथली सैलरी आ जाएगी. दूसरा, अगर आप लोग रिसर्च का आपको बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने रिसर्च गाइडेंस की एक अलग सीरीज स्टार्ट की है. उसके पूरा प्लेलिस्ट है. केस रिपोर्ट कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, स्टैटिस्टिक्स कैसे करनी है, स्टडी डिजाइन कैसे करना है, तो वो सुन लो. उसकी वीडियोस आई एम हैप्पी टू गाइड एंड मेंटर. लेकिन होपफुली मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूं, एंड आई विल बी इंटरव्यूइंग वन पर्सन हु वाज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट इन Selena's class, published 3 papers in peer reviewed indexed journals as a single author. So you as a KE student, so you can do that सिंगल हैंडेडली कर सकते हो बगैर किसी की सपोर्ट के भी. और सारी गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू डू इट एंड हैव द मोटिवेशन टू डू इट. और रिसर्च पे भी अगेन मेरा रिसर्च में जितनी भी सीरीज हैं वो सुन लो कि रिसर्च अमेरिका में कैसे ली जा सकती है. तो दैट विल रियली हेल्प यू. Saleena, would you like to add anything before we wrap up the interview? Anything you want to conclude with? No, I just wished the very best of luck to everybody who's, pursuing USMLE or who's pursuing whatever academic things in other places. Just best of luck, or inshallah everything will be fine. Just have faith and stay put. Excellent. Well, thank you so very much for doing this. Really appreciate it. I get it. आपका छोटा सा 3 साल का बच्चा है, बेचारा बीमार भी इतना रहता है, and you took out his time to do this interview with us. Just with the hope that juniors will learn from it. I really appreciate that, and thank you very much for doing that. Hafiz. All right, everyone. I think you learned something from this video. I truly hope you did, and if you think you did, please like it, share the channel with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell, and like I always say, never give up, never lose hope. Bye.